आओ देखें क्रिकेट टीवी। Hello, good afternoon. Welcome to Cricket TV. I'm Priya Joshi with Hedvi Patel and Mr. Narayan Pusari. So आज हम बात करेंगे क्रिकेट के टेस्ट क्रिकेट डे 4 के बारे में, लेकिन उससे पहले वी वुड लाइक टू पे आवर कंडोलेंसेस टू दिलीप जोशी, जो कि एक दिलीप दोशी, जो कि क्रिकेटर थे. ही पास्ड अवे ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट. 77 के थे. और बहुत बढ़िया क्रिकेट खेलते थे. ही प्लेड 33 टेस्ट एंड 15 ODIs बिटवीन 1979 एंड 1983. There's a rich legacy of sportsmanship behind him. और ये जो थे, काफी अच्छा रिकॉर्ड है उनका. ही प्लेड 238 फर्स्ट क्लास मैचेस, claiming 898 wickets, with 43 5 wicket hauls and 6 10 wicket hauls. काफी बढ़िया क्रिकेट खेलते थे. वो गुजराती थे, सूरत से थे. नारायण सर, मोर फ्रॉम यू. Yeah, so he came in 1979 when Bishan Singh Bedi retired, and that those four people, Bedi, Prasanna, Chandrasekhar, and Venkat, had played good innings for India. But he also, Mr. Doshi also played 4 years, and the statistics is there to stay. And domestic cricket, he was very heavy. He took 898 wickets, which is very good. So. Uh, uh, and he played a lot of county cricket also for a decade in England. So, and now India is also in England. So, our homage to Dilip Bhai Doshi, Om Shanti. So we start about day 4. कल जो मैच खेला गया था उसका रिव्यू करते हैं. तो हेतवी, व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट डे 4? Well, day 4, I think day 3 का review किया, तो we thought maybe day 4 will know which side the game will go, but then again day 4 gave us more interesting game. The game is still on. We don't know, anything can happen at the moment. We expected India to score 350 or beyond, and 364 all out was good, but again India repeated their first inning drama. The tailenders, I think 6 wickets for 31 runs. That's something, they'll have to look back, they'll have to circle back to, they'll have to figure that out, how to resolve that. Karun Nair played, but then again it was disappointing. He didn't play that well as expected from him. We have two batsmen who, between them, I think there's around 195 run of partnership between KL Rahul and Rishabh Pant, which is commendable. And I think that's the reason we were at 364. It would have been difficult otherwise, and the game could have easily been passed on to, easily been an England's win then. And the 3 wicket spell of Josh Tongue, he took away the tailenders like that, in 4 balls. So that was amazing. Ryden Cars, he also took 3 wickets. So I think 3 people that came out were KL Rahul, Rishabh Pant. They anchored the inning pretty well. Rishabh was swinging his bat like, I don't know, he was throwing his bat anywhere and everywhere. It was crazy. It was interesting. It was fun. I think India will have to look at its lower order though. They are not contributing at all. 31 runs is nothing, to be honest, for the 364 runs total. And Karun Nair, he needs to step up as well. 20 runs was quite not justified to, the kind of persona he is. So yeah, that answer. So, the day 4 was the first 5-7 minutes were very encouraging for England. So, Cast took Gill's wicket in the 7th ball of the match, and India were 92 for 3. Then there were lots of movement on and off the pitch, which Gill was not able to judge that delivery basically. Otherwise, he's a fine guy, and he played on. He got self out. So. What I understand is that England were at that point of time looking for another wicket. And if another wicket would have got, England would have got better time, the game would have totally changed. But that did not happen. Rahul's 137 and Pant's 118, his second innings of the match, and their partnership of 195, as you rightly
mentioned, put India in the driver's seat, correct? Right. So if you see the way these two people batted, they smothered the lively pitch, the erratic bounce in the first session. They had luck also their side. Rahul was dropped on 58, and as you mentioned, Pant edging twice in vacant slip areas. So क्या होता है जो आदमी जिगर करता है ना उसको ही लक फेवर करता है. This is what usually said. So that was there, and if you see from Rahul's point of view, he shouldered the responsibility of a senior batter, and Pant played in his distinctive style, the way he plays, the way he speaks in the stump mic. He speaks to his co-batter, and the way he speaks. So for Rahul, it was good signs right from the time he was in Australia. He was not sure of which batting order he will be. He opened there. Then when Rohit came again, he came down the line. Again in the last match, he opened. So now he has made his mark as an opener with this inning. So India should not look left, right, center, and now should rely heavily on him basically. So both of them, if you see, scored only 64 and 24 overs. And in our group also we put that is a very low scoring match. So pre-lunch, but that was to a plan. They wanted to ensure that they don't lose any wicket, and score is also slowly moving. And you see the way post-lunch these two people, perform. In the first 2 hours pre-lunch, they hit only 6 boundaries, and in the first half an hour post lunch, they hit another 6. So the aggression was shown on the field basically. In this way, Rahul became the first Asian batter opener to hit 300s against England. Again, a lot of records were broken yesterday or what took place. If you see Pant, he was 31 at lunch, scored 95 in no time, and Yes. then took 5 overs to reach single to the 100. So it was not like Pant matching. Otherwise, first innings from 95 to 101, he hit a 6 straight off. Like that. And Yes. yeah. So, and then he became the second wicket keeper to score 200s in a test after Andy Flower. Andy Flower in Zimbabwe in 2011, almost 14 years ago. And he's the first Indian to achieve 2 tons in England. First Indian. Others are Gavaskar twice, Dravid, Kohli, and Vijay Hazare, the first one way back in 1947-48. Again, as you mentioned, the lower. Let's take the lower order batsmen. India's last 6 wickets in the first innings, 31 runs, and last 7 wickets in second innings, 41 runs. So in total, if you see, take a graph, both the innings put together, the Indian top five, 721 runs. Yes. And the bottom 6 only 65 runs. So the difference of 650 odd is the highest for India till now in Test cricket. But as you also mentioned, Hetvi, it is an alarm for the management, because they cannot expect the top batters, the top 3, top 4 to perform every time regularly. So the middle order, especially the all-rounders, they have to perform, whether it is what you call our Jadeja or a Thakur, they are all-rounders. So they have to perform. 30, 40, 50 रन तो बनाने ही चाहिए उनको. ठीक है, करुण नायर फॉर्म में आए, अच्छा बैटिंग किया उन्होंने, एंड इवन आप देखोगे अपने ओपनर भी जो फर्स्ट इनिंग में परफॉर्म नहीं कर पाए थे, उन्होंने भी अपनी बार. साई आल्सो प्लेड वेल. ही विल लर्न. ही इज अ गुड लर्नर इफ यू सी. सो वो समझते हैं कैसे बेटर देर. अगर आप इंग्लिश की बॉलिंग देखो, सो वी हैड वोक्स, 19 overs, 4 maidens, 45 1, excellent bowling. Cars 19 to 83. He took good wickets basically. That is something. Tongue also, as you mentioned, he cleaned off the tail enders. Bashir. Now what I am looking at Bashir is 22 over में एक maiden 90 run और 2 wicket लिए. He was taken to the galleries by Pant on a number in 1 over. I think he hit 19 runs for him basically. So अभी बशीर के सामने let's see how our Jadeja plays. तो एक वो बात है. So how things work out, let's see. उन्होंने 96 overs किए. They did not give more than 3 overs to Root.
otherwise Root as a part-time bowler also has taken some 80 odd wickets in test. ऐसा तो नहीं है. तो but somehow Stokes may not have, have not must have, thought process कि भाई he just bought Root when Pant was on 99 actually. तो ब्रेक करने के लिए उसको लाया था, 2 ओवर उसने और डाले. एंड नाउ लेट्स सी द फिफ्थ डे हाउ इट विल वर्क ऑन. इफ अगर आप देखो, अगर इंग्लैंड की पहले बैटिंग देखोगे ना, तो उनके जो टॉप 7 बैट्समैन है, राइट फ्रॉम क्रॉली टू जेमी, दे स्कोर्ड 360 रन्स आउट ऑफ दोस 465, उनके जो इनिंग्स में जो बनाए थे Yeah. उन्होंने. तो अगर ये टीम, अभी क्रॉली लास्ट टाइम आउट पे 4 पे आउट हो गए थे, अभी वो 12 पे खेल रहे हैं ना, और डकेट ने 62 बनाए थे. तो अभी इसका मेजर बारोदार है ना ये, दिस विल डिपेंड ऑन द फर्स्ट 1 hour ऑफ प्ले, हाउ जसप्रीत एंड पॉसिबली सिराज एंड प्रसिद्ध एंड पॉसिबली अगर ठाकुर को भी बॉलिंग दी जाए तो हाउ विल दे बोल वर्कआउट. और ठाकुर के लिए तो क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ही हैज टू सर्वाइव इन द मैच, इन द टीम फॉर द नेक्स्ट टेस्ट. ही हैज टू रियली परफॉर्म विद हिज बॉलिंग नाउ बेसिकली, कितना उनको ट्राई करते हैं, कैसे करते हैं. ऐसे मौके पे मेरे को याद आती है कुलदीप यादव की. तो कुलदीप यादव इज अ स्ट्रॉन्ग रिस्ट स्पिनर, Yes. ही बढ़िया स्पिन करते हैं. एंड ही कुड हैव बीन अ मैच विनर इन सच सिनेरियो बेसिकली, और फिफ्थ इनिंग के अंदर चाहे वो इंग्लैंड बेसबॉल खेले या स्कोर ब्रिस्कली करे, वो एक ऐसा बंदा है जो कि कभी भी किधर भी एक विकेट ले सकता है बेसिकली, सो उनको अभी 350 रन बनाने, उन्होंने 21 बनाए हैं. मतलब एट एन एवरेज ऑफ से 120, मतलब 1 मिनट पे 1 रन बनाना है उनको 120 के तीनों सेशन के अंदर. सो फिफ्थ विकेट है. आई आई सी इन केस दे आर लुकिंग एट बेसबॉल टाइप ऑफ क्रिकेट टुडे, तो चांसेस हैं कि उनके 40% जीतने के, 60% वो हार सकते हैं, बिकॉज दे विल स्टार्ट लूजिंग विकेट्स बेसिकली. दिस व्हाट आई फील. सो it's not that easy. Where they have chased 350 plus is not a pitch like Headingley. Those are other pitches in England, not otherwise. उन्होंने स्कोर किया है, 382 बनाया, 317 बनाया, लेकिन वो उतना नहीं बनाया है बेसिकली, और लास्ट टाइम भी देखे तो इनके 3-4 पार्टनरशिप अच्छी रही थी ना. पोप की और डकेट की रही थी, पोप और रूट की रही थी, और जेमी और ब्रूक. लेकिन जेमी और ब्रूक की वो रही थी, दैट वाज डाउन. सिक्स पार्टनरशिप है बेसिकली, सिक्स विकेट. सो इट विल बी अ वेरी इवनली मैच. आपने कहा वैसे, आई फुली अग्री विद यू, इट इज ओपन. लेकिन मेरे ख्याल से द फर्स्ट 1 hour 90 मिनट्स विल नो वेयर वी स्टैंड, कि इंग्लैंड ड्रॉ के तरफ खेलने की कोशिश कर रहा है या जीतने की तरफ खोल रहा है. और जीतने की तरफ कर रहा है तो इंडियन बॉलर्स सिराज और प्रसिद्ध, जो फर्स्ट इनिंग में इतना नहीं कर पाए, दे वर टेकन हिट वर 250 runs between both of them, वो कैसे करते हैं. एंड आई स्टिल फील जडेजा को अच्छे टाइम पे बॉलिंग देनी चाहिए पूरे इस इनिंग के अंदर, एंड सी हाउ इट वर्क्स आउट. दिस इज माय थॉट प्रोसेस. लेट्स सी हाउ इट वर्क्स आउट. Right. I think the weather, rain or bad light delays, I think that will play another important role in making the game draw, bringing that result. So Not that is draw also, also, or possibly the pitch के ऊपर काफी असर पड़ेगा उसका. वो भी है. Yes, that will happen as well. सो वो भी एक I फर्क रहेगा. हाँ बोलिए, सॉरी. I read some things about Shubman Gill not really good. He led Gujarat Titans in a similar way. He relied so much on his top 3 batsmen. Do you think that pattern is being repeated here as well? Is it नहीं, because that's T20, this is test, I understand it's different, but I just read it somewhere, so I thought नहीं we नहीं, can क्या talk. होता है यूजुअली, क्या होता है कि किसी फैमिली में भी अगर इफ यू हैव 2 or 3 ब्रदर्स और सिस्टर्स हु आर डूइंग क्वाइट वेल, तो यू गेट अ बिट रिलैक्स. चलो ठीक है यार, वो कर रहे हैं ना, Yeah. तो नहीं करने तो भी चल जाएगा, अपना Hmm. तो जॉइंट फैमिली है. सो वैसे ये है क्रिकेट के अंदर. अरे उन्होंने कर लिया ना, अभी 360 रन तो बन गए हैं, अभी अपने को क्या खेलने की जरूरत है. बट अभी क्या होता है, हर एक आदमी को खुद को भी सर्वाइव होना है. सी, हाँ, दे आल्सो हैव टू परफॉर्म एंड सर्वाइव. और ये कुछ 1 या 2 टेस्ट मैच सीरीज नहीं है, ये 5 टेस्ट की सीरीज है, और बैक टू बैक लगे हुए हैं, और सब इंग्लैंड में है. So it is high time that everybody starts contributing. Possibly there may be some ill luck, bad luck, और समझो Yeah. बॉलिंग बराबर नहीं गिरी है, और possibly सॉरी बैटिंग अच्छी नहीं हुई है, और उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी हुई है, ये भी पॉसिबल है, ऐसा नहीं होता है. सो लेकिन
ये क्या हो गया, जब दो इनिंग बैक टू बैक आ गई और दोनों सेम रन लग गए, सो वो एक पैटर्न लगता है लोगों को, हाउ यू Yes, सेड कि ये yes, पैटर्न है, कि ऐसा तो yeah. नहीं है, कैसे करना है नहीं. एंड सी आई कैन अंडरस्टैंड, प्रसिद्ध, सिराज एंड नीचे वाले जो है जसप्रीत, दे नॉट बैटिंग, आई कैन अंडरस्टैंड, 9, 10, 11, बट अप टू 8 जो आदमी लोग को Jadeja. लिया गया है या ऑलराउंडर्स को लिया गया है. सो आई थिंक वी विल डिस्कस अबाउट द ऑल्टरनेटिव्स once this test gets over tomorrow in the review, यस कि भाई कौन अच्छे दूसरे लोग किसको ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं, एंड वी कैन वर्क आउट दैट. प्रिया जी. Definitely. जी. तो डे 5 है, देखते हैं कैसा परफॉर्म करते हैं. लेट्स वॉच द मैच और कल लौटेंगे रिव्यू के साथ. डू कीप वॉचिंग क्रिकेट टीवी, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके कमेंट्स भेजते रहिए. हम कल फिर से लौटेंगे. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. Thank you. आओ देखें क्रिकेट टीवी.